Hi friends, this is Shazad Sumra and you're watching Shades of Shaz. Friends, first of all, sorry कि इतने अरसे के बाद वीडियो आई है क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, मुहर्रम भी आ गया था. एंड अ क्विक शाउट आउट टू नीरज भाई, अब आपका ये नेक्स्ट लेसन आपके सामने आ गया है. सो फ्रेंड्स, आज का जो ये ट्यूटोरियल है, इट्स अबाउट द Islamyat paper pattern, that is Islamyat 2058 for CIE, and let's begin with it. Islamyat 2058 has paper 1 and paper 2, but before that I would like to give reference to the books that we will be using, or the books which are recommended for it. This is the first book that is countrywide used, and this is written by Farkhunda Nur Ali, and this is the other book which is written by Dr. Saqib, and this is also very commonly used in Pakistan. अच्छा, अब इन दोनों बुक्स के क्या फर्क हैं कि the one which is written by Farkhunda Nur Ali is not endorsed by CIE. However, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि this is for O levels, but it is not endorsed by CIE, and this book is endorsed by CIE. अच्छा, अब दोनों की एफिकेसी के बारे में बात करते हैं. तो इफेक्टिवनेस दोनों की बहरहाल बेहतर ही है, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि ये वाली बुक आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि 2012 के जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद दिस बुक क्वाइट बिकम्स इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग फॉर इस्लामियात. सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट दीज टू बुक्स, एंड नाउ वी कम टू पेपर पैटर्न. एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें आपको ट्यूटोरियल मिलेगा पेपर पैटर्न ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री 2059, और उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर अभी नजर आ जाएगा. बाय क्लिकिंग दिस यू कैन गो टू दैट वीडियो. फ्रेंड्स, इस्लामियात 2058 पेपर 1 की बात करते हैं, और उसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा कि हाउ कैन यू क्लासिफाई योर स्टडीज फॉर इस्लामियात, एंड बहुत ही आसान तरीके से आप सेगमेंट बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, पेपर 1 इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, and question number 1 is of 8 marks, which is from the surahs that we have studied in our syllabus. There are 15 surahs जिनके जो 3 themes में divided हैं: Allah in himself, Allah with his created world, and Allah with his messengers. और इन तीनों themes को लेकर हम question number 1 को attempt करते हैं, जो 8 marks का है. कोई भी इसमें 3 surahs दी जाती हैं out of 15 that we have studied, और उन 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करनी होती हैं, और हर किसी के मार्क्स 4 हैं, और हर सूरा को हम 2 पार्ट्स में इलाबोरेट करते हैं. एक पार्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है और दूसरे पार्ट में उसकी इम्प्लीकेशन देनी होती है. ये था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो 14 मार्क का है, एंड इट इज अ स्प्लिट क्वेश्चन, जिसमें ए पार्ट 10 मार्क का होता है और बी पार्ट 4 मार्क का होता है. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंपल्सरी, और इस क्वेश्चन में जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान, एंड द कंपिलेशन ऑफ होली कुरान इन द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट, इन द टाइम ऑफ हज़रत अबू बकर, इन द टाइम ऑफ हज़रत उस्मान, कुरान की अहमियत एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, इट्स पोजीशन इन मेकिंग द इस्लामिक लॉ और शरिया. एंड उसके साथ साथ अब एक टेक्निकल क्वेश्चन भी आता है कि इसकी जो 3 थीम्स हैं जो हमने डिस्कस की थी, विच मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट दे आर ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 1, मगर अब उसकी इम्प्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 2 में भी हो जाती है. और उसका इस तरह का सवाल आता है कि फ्रॉम द पैसेजेस दैट यू हैव स्टडीड, डिस्क्राइब अल्लाह's रिलेशन विद हिज क्रिएटेड वर्ल्ड और विद हिज मैसेंजर्स, और हाउ अल्लाह हैज डिस्कस्ड हिज एट्रीब्यूट्स. ये तीनों थीम्स इसी तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे आती हैं, एंड बिकॉज those 15 surahs that we study are part of Quran, and question number 2 comes from Quran, इसलिए इन questions को भी यहाँ पे associate किया गया है. उसके बाद हम आते हैं question number 3, 4 and 5, which are optional. इन 3, 4, 5 में से हम कोई भी हमें 2 करने होंगे, और हम अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के क्या टॉपिक्स है. क्वेश्चन नंबर 3 इज मोर ऑफ इवेंट ओरिएंटेड, जिसमें बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट की लाइफ इन मक्का एंड लाइफ इन मदीना को डिस्कस किया जाता है, और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी
स्प्लिट क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट 10 मार्क्स का है और इसका बी पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का है। So that brings us to question number 3 जो लाइफ इन मक्का एंड लाइफ इन मदीना से आएगा, बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट के बारे में। Now we come to question number 4 and 5. 4 and 5 are also split questions. उसमें 10 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है दोनों क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर हम ऊपर आए तो क्वेश्चन नंबर 4 टेक्निकली स्पीकिंग comes from the first Islamic community. And what is first Islamic community? जो सहाबा कराम एंड वाइव्स एंड डॉटर्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके साथ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, जिसमें 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, 13 वाइव्स और दूसरे प्रोमिनेंट सहाबा कराम का नाम दिया था। और ऑल टुगेदर ये 30 to 35 पर्सनालिटीज होंगी जिनकी आपको बायोग्राफिकल डिटेल्स और इंपॉर्टेंस याद करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 technically speaking, again I would repeat, that comes from first Islamic community, magar sometimes it also comes from Holy Prophet's lifetime in a way that वो Holy Prophet के conduct जहाँ से हमें lesson मिल सकते हैं, जैसे last sermon of Holy Prophet's behavior towards the wives, towards the Sahaba Karam, towards the companions, towards the scribes and towards the community, his general conduct, इसके बारे में भी सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, और फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, मगर इसमें से जो ज़्यादा सवाल जो अक्सर रिपीट होता है वो होता है हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा की बायोग्राफिकल डिटेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इट वाज अबाउट पेपर 1 इस्लामियात। लेट मी कंक्लूड इट। 5 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर फ्रॉम कुरान, दोनों कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स का आता है, जो सिर्फ और सिर्फ 15 पैसेजेस जो कुरान के हमने पढ़े हैं हमारे सिलेबस में उसमें से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 comes from history and importance of Holy Quran and its place in the Islamic Sharia, और वो 15 सूराज also repeat हो सकती है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद 3 क्वेश्चन एंड 4 and 5 आर ऑप्शनल, जिनमें से कोई भी 2 करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट से आता है एक्सक्लूसिवली, लाइफ इन मक्का एंड लाइफ इन मदीना। क्वेश्चन नंबर 4 में बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट कैन बी रिपीटेड, मगर जिस सबक आमोज पार्ट जो होता है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 topic can be asked in question number 4 also, which is first Islamic community. So that is paper 1, friends. Now we come to paper 2. Paper 2 has 5 questions altogether and uska question number 1 compulsory hota hai, magar question number 1 is exclusively from ahadith. There are 20 ahadith that we have to study in our syllabus, और उन 20 में से कोई भी 3 ahadith हमें एग्जाम में दी जाती हैं, और उन 3 में से हमें किसी भी 2 को अटेम्प्ट करना होता है। और उन 2 के भी मार्क्स किस तरह है कि हर हदीस को 4 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, और हर हदीस की एक्सप्लेनेशन और इम्प्लीकेशन दोनों डिस्कस की जाती है पार्ट ए और पार्ट बी में, और इस तरह टोटल ये 8 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन बनता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2 of paper 2 is regarding hadith, its importance, its place in Sharia, its authenticity, कि इसकी authenticity को कैसे चेक किया जाता है, hadith किस तरह compile हुई in the time of Holy Prophet, after the death of Holy Prophet, in the time of Tabain, in the time of Taba Tabain, and the golden period of the compilers, जिसमें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, जामे, तिरमिजी के जो कंपाइलर्स हैं उनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स और इन किताबों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करने होते हैं, और वेरियस पार्ट्स ऑफ हदीस आर आल्सो डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। बट अगेन क्वेश्चन नंबर 1 कम्स फ्रॉम दोस 20 पैसेजेस, तो एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा नहीं बल्कि 10 मार्क का सवाल आ सकता है उन पैसेजेस से भी, कि फ्रॉम द पैसेजेस that you have studied, from the ahadith that you have studied, what lesson do we get regarding brotherhood, and this kind of other questions also can come in question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जाने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लूं कि क्वेश्चन नंबर 2 इज हदीस, और हदीस की अहमियत शरिया में,
और यही क्वेश्चन नंबर 2 पेपर 1 में था, विच वाज अबाउट कुरान और कुरान की अहमियत शरिया में। अब शरिया के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4, कुरान, हदीस, इजमा एंड क्यास। अब कुरान और हदीस की पोजीशन टू डिस्कस हो गई, अब रहता है इजमा एंड क्यास। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 जो कंपलसरी क्वेश्चन है पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, इन दोनों में इजमा एंड क्यास को पूछा जा सकता है। सो यू कैन नॉट अवॉइड द इजमा एंड क्यास क्वेश्चंस रिस्क आल्सो इन पेपर 2's क्वेश्चन नंबर 2 और इन पेपर 1's क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, however, अगर पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया इजमा एंड क्यास, then you don't need to learn it again for paper 2. So friends, these were the 2 questions which were compulsory questions. Now we move on to the 3 optional questions, question number 3, 4 and 5. Question number 3 is an optional question which is exclusively from Caliphate, और ये भी इसका फॉर्मेट ये है कि 10 और 4 मार्क के 2 पार्ट्स होते हैं इस क्वेश्चन के, मगर इस में हम सिर्फ और सिर्फ खुलफाए राशिदीन के खिलाफत वाला टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे, ना कि खिलाफत से पहले वाला टाइम पीरियड, जिसमें हजरत अबू बकर की खिलाफत और उसके प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस किए, और फॉर एग्जांपल ज़कात के जो रिफ्यूज़ल के ऊपर उन्होंने जो जंगें की, और अपोस्टेसी मूवमेंट को सप्रेस किया और फॉल्स प्रॉफिट्स को सप्रेस किया, एंड देन इन द टाइम ऑफ हजरत उमर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी एक्सपेंशन, उनके रिफॉर्म्स इन वेरियस एरियाज, एंड इन द टाइम ऑफ हजरत उस्मान उनके साथ जो कंस्पिरेसीज हुई और उनके जो एक्सपेंशन था वो सब कुछ, और हजरत अली के ज़माने में उनके खिलाफत के ज़माने में उनको जो मुश्किलात पेश आई, इनका क्वेश्चन होता है। एंड टेक्निकल स्पीकिंग अगर हम देखें तो इन 4 कैलिफ्स की बायोग्राफी में, इन 4 कैलिफ्स की खिलाफत में हमें एक एक मेजर क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, तो हम सारी इनकी खिलाफत कवर कर लेंगे। और वो क्वेश्चन हजरत उमर का ही आ सकता है कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इनकी खिलाफत क्यों अनपैरेलल होती है इस्लामिक हिस्ट्री में, वो डिस्कस कर लें। हजरत अबू बकर को क्यों सेवियर ऑफ इस्लाम कहा जाता है, और हजरत उस्मान के साथ क्या इश्यूज है और हजरत अली के साथ क्या इश्यूज है उनके ज़माने में, ये अगर आप कवर कर लें तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। अच्छा, रिमेंबर द ट्रिक दैट आई हैव बीन टेलिंग यू, दैट आप क्लासिफाई करें। तो जब मैं आपको फ्रेंड्स पेपर 1 में मैंने जब आपको टॉपिक्स बताए थे विच आर एसोसिएटेड विद दीज क्वेश्चंस, तो आप उन टॉपिक्स की तैयारी करते जाएं, क्वेश्चन वाइज आपकी तैयारी इस्लामियात की होती जाएगी। We come to question number 4, which is from Articles of Faith, जिसमें अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान और डे ऑफ जजमेंट पर ईमान, ये सारी बातें डिस्कस होती हैं, और हमारे बिलीव्स और उनकी इम्पोर्टेंस इस दुनिया में रहते हुए क्या है वो डिस्कस होती है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम पिलर्स ऑफ इस्लाम, दैट कैन इंक्लूड हज, एंड दैट कैन इंक्लूड हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात एंड जिहाद। जिहाद इस उसके क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और वो इतने डिटेल नहीं होते, वो 4 मार्क का क्वेश्चन कभी जिहाद का आ जाता है। सबसे ज़्यादा चांसेस हज और नमाज के होते हैं, अक्सर ज़कात और रोज़ा कॉम्बिनेशन के साथ आता है। एंड लेट मी टेल यू, हज एंड प्रेयर आर वेरी वेल डिस्कस्ड इन फरखुंदा नो रिलीज बुक, मगर जो बाकी वाले पार्ट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साकिब की किताब में आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट P2 एंड P2 का फॉर्मेट। लेट मी कंसोलिडेट इट, दैट पेपर 2 में भी 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 14 मार्क्स हैं। उसके बाद 3, 4, 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसी तरह इसके टोटल 50 मार्क्स होते हैं और पेपर 1 के भी टोटल 50 मार्क्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और सब्सक्राइब करें। वैसे मैंने देखा है कि मेरे वीडियोस जो अक्सर जिन लोगों ने देखे हैं उसमें 50% तो वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और 50% वो हैं जिन्होंने विदाउट सब्सक्रिप्शन मेरी वीडियो देखी है। तो यार भाई लोग, अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। दिस इज शहजाद सुमरो साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।